Hello, good evening. Om Shanti. Welcome. Good evening. Om Shanti. Om Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti. Om Shanti, good evening. Om Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti. Good evening. Om Shanti, good evening. Om Shanti. Good evening. Hope everyone is doing well. Right. Today, we thought to explore the topic become hurt proof. हिंदी में क्या कहेंगे हर्ट प्रूफ को? दुर्घटना मुक्त. दुर्घटना मुक्त. क्या बोला? हर्ट प्रूफ. Hurt proof. You know, in Sunday's Murli, we heard the two words prasannata yukt and aprasannata mukt. So hurt proof is where we don't feel hurt. है ना? हर्ट यानी ऐसे हिंदी में कहें कि किसी ने कुछ कहा और अंदर से बात चुभ गई, फीलिंग में आ गए जैसे. तो ऐसे कैसे हम स्थिति क्रिएट करें? How to create a stage where there is no feeling of hurt at all. One is that, you know, and we've all experienced it. It's common for everyone to feel hurt, you know, especially in relationships. And especially those who are close to us, if they say something or some misunderstanding happens, and there's always a feeling of hurt. So one thing is we feel hurt, then we try to solve the problem. But the other is to create a stage where there is no hurt at all. मतलब कोई बात चुभे ही नहीं, कोई बात ऐसे गलत लगे, feeling proof जैसे हो जाए. Sometimes Baba also says Maya proof, you know, so that there is no thought of Maya. Just like, you know, if there is something which is waterproof, water cannot get inside. So in the same way, अगर hurt proof है, तो hurt अंदर नहीं जाएगा. Hurt will not come inside. So, so this thought was emerging, you know, just say when Baba said that in last Sunday's Murli, to be unconditionally happy means nothing can bring my stage up and down. कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करे. Or really what, you know, sometimes brings our stage up and down is this feeling of hurt. You know, suppose we have had a good yoga. बहुत अच्छे से हमने अनुभव किया. हम योग से उठ के आए और किसी ने हमें थोड़ा कमेंट कर दिया, क्या आप तो योग में बैठे रहते हो, आपको सेवा नहीं करनी? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो तुरंत क्या फीलिंग होगी थोड़ी कि हर्ट की. फिर जो योग का अनुभव है वो सब फिर नीचे आ जाएगा, isn't it? So many times it can happen, right? It's a kind of a sudden kind of precipitation of that elevated consciousness into the real world. So how to deal with it? Why does it come? How to deal with it is what we will try and understand today. So one thought that I came across is very nice quote that the soul never gets hurt. It is the ego that gets hurt. यानी आत्मा को कभी कोई चोट नहीं लगती है, वो ईगो को लगती है. And when I am in ego consciousness, when the ego is feeling hurt, I feel that I am getting hurt. And then that's how I create the feeling of hurt. Like no one else is hurting me, but I am hurting myself because I am creating that feeling of hurt. है ना? मतलब हिंदी में हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि कोई दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, पर अगर हम ईगो में हैं तो हमें हर्ट की फीलिंग आएगी, और अगर ईगो में नहीं है, आत्मा में है, तो हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, if I take a stone, है ना,
and if I throw up the stone, let's say towards a wall or something, और जोर से हम मारेंगे, right? If I throw it with force, then it might create a hole or some dent in the wall, right? So the wall gets hurt. But the air through which the stone goes, does the air get hurt? Yeah. Air does not get. हवा में जब हम फेंक रहे हैं तो दीवार को तो चोट लगेगी, पर हवा को तो चोट नहीं लगेगी, है ना? हवा को तो चोट नहीं लगेगी, दीवार को लगेगी. Why? Because, wall is something which is visible, wall has an identity, something which is there. And so it sees the stone as something which is an impact on its identity. And that's why it is hurt. But air is so invisible, air cannot even be seen. Nothing happens to the air. So in the same way, soul is invisible. Atma to invisible hai. So Atma ko, when I'm in the state of soul consciousness, then there is no feeling of hurt. Only when I have identified myself with something happening in the real world, either through actions or through positions, that I feel hurt. Is it true? Yeah. Because there is a resistive, जैसे wall है, wall is, straight खड़ी है. तो ऐसे ही अगर हमारी कोई भी, whatever identity we create, and we feel that's what we are, then you feel hurt. Otherwise we don't. ऐसे आइडेंटिटी जो बनाई है वो भी इल्यूजन ही तो है. Illusion. Yeah. सच्चाई तो कुछ है नहीं. Now the good thing is that if I'm feeling hurt, it is a good sign. Why? He's reflecting that I'm not something wrong. Yeah. It's a reflection that, okay, I have attached myself to this ego that I need to let go of. अगर कोई हर्ट की फीलिंग ही नहीं आएगी तो मैं पता ही नहीं चलेगा कि पुरुषार्थ क्या करें. अगर हर्ट की फीलिंग आई है तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि कोई ना कोई ईगो है, there is some ego that I'm holding on to, that I need to let go. रियलाइजेशन हुआ. And then I will make effort to let go. So this really becoming hurt proof is nothing but the ability to drop the ego. Right? और जितना जल्दी, the quickly I can drop the ego, I can really experience being hurt proof. नहीं? जितना जल्दी हम ego को हटा दें, उतना जल्दी. And then ego, out of the 5 vices, is the subtlest. Ego, 5 विकारों में सबसे सूक्ष्म है ना? और ईगो को पहचानना भी उतना आसान नहीं होता है. बाकी विकारों को पहचानना फिर भी इजी है. जैसे गुस्सा है तो पहचानना इजी है कि गुस्सा आया. लोभ है, मोह है, सबको पहचानना इजी है. पर अहंकार जो है, ईगो है, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है. नहीं, it's not that easy. It's extremely subtle. And that's why, sometimes Baba would say that, Maya is sarvavyapi, means in everything, Maya can create a different form and come. And that's why the ability to drop the ego needs some spiritual work. Right? Hurt proof तभी बनेंगे जब when I can drop the ego. और ego को drop करने के लिए पहले उसको पहचानना पड़ेगा. ego क्या है? कैसे आता है? Right? So, let us share a few slides here. Is it visible? The slides are visible. Yeah. Yes. Oh, okay.
So let's look at how hurt works. Suppose I feel hurt. Suppose मुझे hurt हुआ. Then what is the next reaction? What do I think then? मुझे hurt हुआ. मुझे hurt हुआ. उसने मुझे hurt किया. Normal जैसे एक लॉजिक की तरह अगर हम सोचे, उसने मुझे hurt किया तो अब मुझे उसको hurt करना है. ऐसे होता है ना कि मुझे थोड़ा रिएक्शन करना है या रिवेंज कुछ लेना है, तो hurt leads to reaction or revenge. And then what happens? But Revenge यानी बदला, कि मुझे दुख मिला. Retaliation. Yeah, retaliation. Retaliation. Revenge is rather a strong word, but retaliation or reaction is even better. So then it creates the feeling of an enemy outside. हमें लगता है जिसने मुझे कुछ कहा है वो मेरा दुश्मन है ना? ऐसे ही होगा. और सपोज मैंने रिएक्ट किया, उन्होंने मुझे एक सुनाया, मैंने उनको दो सुनाया. हो सकता है, राइट? I can also say, then what happens is my ego becomes bigger. That's not the solution of the problem, right? Because मैंने दो सुनाया और should be ready to face more. Then I'll say more, then I have to be ready to face more. So ego is getting bigger and bigger and bigger. उस समय ना भी सुनाया, फिर सोचेंगे जब भी सामने फिर पड़ेगा तब देख लेंगे, तब उस समय करेंगे. So, which leads to larger reaction, retaliation, revenge. Means it is increasing. The reality is that the enemy is not outside. The enemy is inside. It is called ego. So the moment I feel hurt, the first step is, rather than thinking that the other person is to blame, it is their fault, they shouldn't have done this, they shouldn't have said this, the main first realization has to be, no, the enemy is inside. That's what Baba always says. बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमें दिखाना है. यही बाबा कहते हैं. So that enemy is called ego. And I have to begin the process of really, making ego less and less, reducing the power of ego. And it can only happen through soul consciousness and God's remembrance. Because the soul doesn't get hurt. The soul doesn't get hurt. So only when I'm soul conscious and when I'm in God's remembrance, only then I can defeat this enemy within. And that's why Baba says, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा भाई. ऐसे देखने में तो शत्रु लगेगा, right? कि निंदा उन्होंने की तो शत्रु है. पर Baba's words are, whoever insults me or defames me is my friend. Why? Because that's enabling me, helping me to become soul conscious. Then I'll realize what is it in me that I'm still holding on to, that's not allowing me to be soul conscious. So this is a big realization, really. This is the first step. This realization that I have to drop ego. The enemy is not any other person. Everyone is a pure soul. Everyone is a child of God. The enemy is ego. That ego needs to be defeated. Mm-hmm. Right. And so there's some ways in which we can understand how ego works. A very nice way someone describes ego, E-G-O, is say edging God out. You might have heard this before. Edging God out. यानी ego है तो परमात्मा नहीं है. Edging God out. E-G-O. So ego, what really it does is it edges, means हम परमात्मा से दूर हो गए.
जैसे ईगो आया तो परमात्मा से हम फिर दूर हो गए, मैंने अगर परमात्मा है तो ईगो आएगा नहीं आएगा, मैंने बॉडी कॉन्शियस है तो ही ईगो, तो ईगो, सोल कॉन्शियस है तो नॉट तो ईगो, ईगो नहीं। वो सब सहन कर लेगा। हाँ, तो ईगो का ऐसे हम देखें उल्टा है, ऐसे भी देखिए ईगो का उल्टा है लव, लव कहे या सेल्फ लव कहे या बाबा's love towards everyone. So let's see how ego works, right? And how we can understand ego, right? फिर से लिखना, अच्छा, you want to write it? I can put it back again. नहीं लिख लो, you can write it. Yeah. The way ego works is, ego will take a small thing, an incident, and it will make it big. है ना? That's the way ego will work. Ego एक छोटी सी चीज लेगा और उसको बहुत बड़ा बनाएगा, है ना? It will blow it out of proportion. जैसे कि मेरी पूरी लाइफ इसी एक इंसिडेंट पे निर्भर करती है, सब कुछ खत्म हो जैसे अगर मेरी हिसाब से चीज नहीं हुई तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, राइट? That's how ego will work, and that's why people sometimes are under such influence of ego that कभी हम इमोशनल होके कुछ क्राइम भी जैसे होते हैं, it's all because of that, right? Ultimately that's the like first kind of influence of ego, right? But that's what ego does. And soul consciousness, the sign of soul consciousness is that anything which is big will look to be very small. Now the first sentence will say soul it's okay, कोई बात नहीं, it's okay, कोई बात नहीं. You fit us. और ईगो में बोलेगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे, ये क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार. That's how the mind will think. In soul consciousness, कोई बात नहीं, it's okay, कोई बात नहीं, सब अच्छा है. कहते हैं ना, all is well, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, it's okay. Means I don't take it personally so much, right? I'm ready to look at the larger picture and let it go. So let us look at some of the aspects of ego, right? So there is one nice quote about ego, and I liked it a lot. It says, ego says, once everything falls into place, I'll feel peace. Soul says, find peace and everything will fall into place. ये होता है ना हमारे साथ, हमें लगता है अरे पहले हर चीज ठीक हो जाए तभी मुझे शांति का अनुभव होगा, पहले मेरी लाइफ में मेरी जॉब भी ठीक हो जाए, मेरे रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए, और जो भी चल रहा है सब ठीक हो जाए, देन तब मुझे शांति मिलेगी. अभी तो मेरी लाइफ में शांति नहीं है, ऐसे ही होता है ना. और स्पिरिट यानी सोल कॉन्शियसनेस में कि नहीं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज पीस, एंड देन because everything is inside out, because when I'm at peace, then everything will fall into place. So through my thoughts, either I am feeding the ego or I'm feeding the soul, right? वो कहते हैं रावण को हम ही बड़ा कर सकते हैं और हम ही छोटा भी कर सकते हैं. We can make the Ravan or Maya larger, bigger, or we can make it smaller by our thoughts, right? Thinking about it. So it's important to realize that whatever actions I perform, whatever thoughts I have, is it feeding the ego or is it feeding the
soul. If it is feeding the soul, मतलब आत्मा को आगे कर रहे हैं, फीड करना यानी खाना खिलाना, उसको फीड कहते हैं। नहीं, हमारे जो भी कर्म है उससे हम आत्मा को नरिश कर रहे हैं या ईगो को नरिश कर रहे हैं। एंड समटाइम्स इट कुड हैपन दैट ईगो कैन कम इन अ वे कि मुझे लग रहा है कि मैं आत्मा को फीड कर रहा हूं, पर रियलिटी में ईगो बढ़ रहा है। भरोसा हो जाता है। जैसे पर लोग कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है, हाँ। पर एक जो रियल ज्ञान होगा उससे हमारे अंदर या नम्रता होगी, नम्रता होगी, है राइट। ना, Yes. सोल कॉन्शियस हो गए हैं। Yes. लेकिन पर कई बार क्या होता है, ज्यादा ज्ञान कहते हैं ना, अंदर में अहंकारी को आना, हाँ। मेरे साथ बड़ा कोई नहीं। Right. Right. And that's why at every step I need to ask myself, am I feeding the soul or am I feeding the ego? Ego is everything to do with the role, is ego. Everything to do with the role. The role could be a spiritual role also, but it is still a role because it is still based in the physical world. मतलब आध्यात्मिक रोल भी तो हो सकता है ना। मैं इतना योग करता हूँ। हाँ, जैसे हाँ, है ना, ये सब भी हो सकता है। पर वही है कि I have to feed the soul and not feed the ego. That's the trick. इसलिए ना दिखते रामायण में दिखाते हैं कि when रामा ही उन्होंने उनकी नाभि में मारा ही रावण की, तभी वो मरे। नाभि यानी कि उसको फीड करना बंद किया। उसको तीर लगाना। हाँ, तो हम ही रावण को, माया को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते हैं। But when I really aim at its, stomach, means उसको खाना खिलाना बंद कर रहे हैं। I'm stopping food to ego. Only then it will come down. Right? So it's very interesting, thoughts. यानी हम ईगो को बढ़ाते जाते हैं। पर अगर उसको स्पिरिचुअल खाना खिलाएंगे तो ईगो हाँ, राइट। तो आत्मा को भोजन खिलाना है। तो that's why when Baba says पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ, towards the soul. Purush is the soul. Purush is the soul, right? So any effort that I make to feed the soul is real Purusharth. But ego can come in disguise and I feel I'm feeding the soul, but actually I'm feeding the ego. So that's important to realize. So let me show a little cartoon to describe this, how it can be, right? ये बड़ा अच्छा क्लास है क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ईगो तो नहीं पड़ रहा है। कई बार जब हम बहुत पद पोजीशन भी प्राप्त करते हैं, कुछ Right. ज्यादा प्राप्त करते हैं, तो पता नहीं चलता है कि हम अंदर ईगो को Right. डेवलप कर रहे हैं। Right. So if you look at this cartoon, it says, I bet I can extinguish my ego before you extinguish your ego. मतलब मैं अपने अंदर से ईगो पहले हटा सकता हूँ, आपके ईगो आपसे पहले। Now this Another state, sign of ego. yeah, it's another sign of ego, right? ईगो की स्टेटमेंट है। Yeah, it's a statement of ego, right? तुम खत्म करो, मैं खत्म करूँ। हाँ, मतलब उनके कहने का है कि I am better than you, I am more spiritual than you, है ना? कि I can become egoless, better than you can, right? So this is also so that's why in spirituality it's very important to realize कि हमारी growth चलती रहे. It's important to discriminate, है ना, कि ego, जहाँ भी ego होगा वहाँ ये सब चीज़ होगा, comparison होगा, थोड़ा competition होगा. And if we look at Baba's Murlis of the last few weeks, Sunday Murlis, they're all about subtleties of ego. Baba is describing कैसे ego आता है, right? और कैसे जाता है, right? Another one is
Oh yeah, well, my dad can reach a higher plane of consciousness than your dad. Again, it's like somewhere, the need or the validation to look spiritual. I may not be inside feeling the happiness, but externally I need a validation. So that is also ego. Right? Suppose हम योग से उठ के आए और कोई बोले, अरे आप तो बहुत उदास लग रहे हो, आपका चेहरा ही अच्छा नहीं है, तो हमें तुरंत हमारी स्थिति नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि we look for validation. हमें तो चाहिए कोई बोले कि बहुत अच्छा था, आपका स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है। आपका चेहरा कितना स्माइली है। हाँ, पर कोई बोले ही नहीं, और ही थोड़ा और बोल दे कि नहीं, ये तो आपकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो हमारी स्थिति और ही नीचे आ जाएगी। Right? So these are subtle games, right? How Maya can come, right? And then instantly my ego will be hurt, spiritual ego will be hurt. ऐसे कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, right? मतलब पिता को लेकर था। हाँ, मतलब कहते हैं कि मेरे डैडी आपसे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ऐसे कि वो है ना ज्यादा ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, लाइक दैट, है ना। And that's why, even in yoga, we have to make sure we are on the right track. Because Maya can सूक्ष्म रूप में आके फिर हमारा ध्यान भटका सकते हैं. That's why, Baba always emphasizes on this. Right? So what happens is, you have played a game of chess, right? Chess सभी ने खेला होगा. So, so this is the relationship between us and our ego. So what is the relationship? We are smaller, but our ego is big. Yeah. So ego becomes Master. Yeah. Yeah. Ego becomes Response to our ego. yeah. And we become subservient to ego. Then ego is using us to make it big, to make itself bigger. Ego is not concerned about the soul. ईगो को आत्मा की नहीं पड़ी है. ईगो को पड़ी है कि खुद को उसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है ना. उसको लगता है लोग मेरे को बड़ा समझे, मैं बड़ा हूँ, हाँ. समझते हैं। यानी ये इम्पोर्टेंट है रियलाइज करना कि जो हमारा एनिमी है वो रियली में हमारा एनिमी है. It's really our enemy. He's not concerned about us, the soul. He wants to make itself bigger and bigger and bigger and eventually destroy. That's the intention of ego. And so it's very important to identify ego hai, ego aa raha hai. And turant I have to then work towards first identify and then let it go and give it to Baba, right? Give it to God. Right? Right? Otherwise, that ego will start to play with us. और कई बार हम वो भी करेंगे जो हम करना नहीं चाहते. होता है ना कई बार. It's like we don't want to do a certain thing or we don't want to say something, but ego will make us do it or say it or something like that. ईगो इल्यूजन में जीता है। हाँ. ईगो इल्यूजन में जीता है, कुछ है नहीं, बस उसका इल्यूजन है। Right. Right. And so that's why it says big egos have little ears. Big egos have little ears. यानी हमें अगर ईगो ज्यादा है तो हम सुनना पसंद नहीं सुनना पसंद नहीं करें. सुनना कम सुनते We won't like दूसरों के कम सुनते हैं, अपनी बचाते हैं. would like to share more rather than listen. Right.
And that's why it says dissolve your ego before it dissolves yourself. मतलब इससे अपने ईगो को खा जाए हमें ईगो को खत्म कर, ईगो को खत्म कर मतलब अगर हम ईगो को खत्म नहीं करेंगे तो ईगो हमें खत्म कर दे. It's a very big thing, you know, to realize. You have to really identify, deal with. And in spiritual journey, there is nothing else. You know, no other effort. The effort is really this: to identify ego, let it go, remember Baba, more and more and more. Right. Right. Mhm. So let's watch a little clip, and in that clip, it defines how do we know that we have ego in our practical life. What are some of the signs that tell us that मेरे अंदर ego है? कैसे पता चले हमें? तो हमारा behavior कैसा होगा अगर ego है तो, है ना? So let's watch it. Welcome back to our channel. We wanted to say a quick thank you for all the love that you've given us, because your ongoing support helps us make psychology and mental health more accessible to everyone. So, thanks again. Now, let's continue. Do you feel confident in yourself? Do you know what you're good at and what you're bad at? Even psychology experts know the benefits that come with being confident in yourself and your skills. The identity that your mind creates about yourself can be described in psychology as your ego, which is a translation for I or me in Latin. So having confidence in yourself and your skill set is great, but being overconfident causes a swollen ego, or having what's called a big head. A large ego can get in the way of your personal and business relationships. Are you worried you might have a large ego? Here are 6 signs that your ego is controlling your life. Number 1, you always have to be right. The ego is the identity that your mind creates about yourself, and it helps you to make decisions based on what you think is right or wrong. However, unhealthy egos only focus on self-interest and desire. This means you must be right about everything and tend to get enraged whenever someone says otherwise. This can be easily seen in conversations or discussions, and even when you're in the wrong, you prefer to cut the discussion off so as to not admit that you are in the wrong. If you're dealing with this kind of problem of ego in your life, then people might find it difficult to maintain a relationship with you. Number 2, you always want more. Do you struggle to feel satisfied with what you have? Do you keep wanting more and more things? It's normal to want to achieve success and have financial security, and to yearn for the things that you really want. But a way to separate this from always wanting more is to ask yourself this question. Do you ever think that too much is never enough? Say your neighbor just got a sports car, and then now you feel compelled to purchase a better sports car than theirs to show that you're better than them. Always wanting more will control your life in an unsustainable way, because you struggle to accept what's going on in the here and now. Number 3, you only focus on yourself. If you have a large ego, you'll focus more on your needs and wants, even when it inconveniences others. This is because you naturally find yourself more interesting and important than other people. You might also resort to manipulative behavior in order to get what you want. A common example of this is when you're deciding on where to have lunch with your friends. Your friends agree to eat at McDonald's, but you would rather have lunch at Burger King. To get your friends on your side, you start saying terrible things about McDonald's to try and manipulate them into going to Burger King, even though everyone else was against your choice for lunch. Eventually, you might find that your friends and family start to steer clear of you, because things always end in an argument that they'd rather avoid. Number 4, you don't like it when other people succeed. Are you constantly comparing yourself to others? Do you feel incredibly self-important? When you have a bloated ego, you feel like you deserve more success than the others around you because you think your hard work trumps everybody else's.
You might be left feeling frustrated when others get promoted at work or get awards at school. You feel that you deserved that promotion or should have received those awards instead because you are prone to jealousy over other people's success. This can harm your friendships and leave you feeling isolated. Number 5, you set unrealistic goals. Do you set unrealistic goals for yourself just to show others that you are superior to them? Setting unrealistic goals for yourself is common behavior with an inflated ego due to the pride and extremely high expectations that you have for yourself. This puts additional pressure and stress on your shoulders and might cause you to push others away. For example, imagine you set a goal of getting full marks on every single course in university to prove that you are smarter than everyone else in your classes. Say you are studying alone, and then your dorm mates are being loud next door, talking and playing music. You angrily march over there and yell at them for being disruptive before going back to your studies. Holding on to the belief that you're better than others will take a huge mental and physical toll on you. You are constantly afraid of someone being better than you and live in fear of the day that others will see you fail to achieve your unrealistic goals. Number 6, you lack empathy. According to Power of Positivity, if you suffer from an overly large ego, you can also be described as a narcissist. You might lack the ability to understand others' feelings and where they're coming from, and are solely focused on your own self-interest. Examples of this type of narcissistic behavior are evident when you say things like, they deserve it because they didn't do anything to stop it, whenever something bad happens to someone else. Of course, not every person with a big head is a narcissist. If you want to learn more about narcissists, check out the link in the description. Did you recognize any of these signs of having a large ego in yourself? Having a large ego is different than simply being confident in your abilities. It's important to note the difference between being egotistical and being confident, as well as the difference between always focusing on self-interest and self-care. Please like and share this video if it helped you and you think it could help someone else too. The studies and references used are listed in the description below. Don't So if we were to summarize the 6 points, what were the 6 points? 6 signs that we have ego. I am right. I am right. नहीं सही हो. पहला है कि I am right. This feeling that only I know I am right, others are wrong. Now it can be subtle, right? I may not always think I am right, but in a certain situation, if I feel नहीं जो मेरे को विचार आ रहा है वही सही है, या जो मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो इसका मतलब है कि I may be under the influence of ego. Ego. The second point, Wanting to compare and get more and more material gains. more. I want more and more. मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. कुछ भी. एक गाड़ी है तो मान सम्मान. ज्यादा गाड़ी चाहिए, कुछ और है तो ज्यादा चाहिए. यानी कंटेंट कभी नहीं लगेंगे. मतलब अगर माइंड इज रेसिंग, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. इफ आई फील दैट्स नेवर इनफ, मुझे और चाहिए, और चाहिए, इसका मतलब इट्स अ साइन दैट ईगो इज ड्राइविंग माय माइंड. Inferiority complex. हाँ, Inferiority complex and superiority complex. या inferiority complex and superiority तो जैसे rat race में जैसे कह सकते हैं कि ego is playing in the rat race. complex. Might is right. Yeah, right. जो मैंने कहा वही right है. वही सही है. Don't want to listen. Right. और क्या था? What else? भी आगे बढ़ सकता हूँ. Yeah. Only I can, I want to succeed. I'll feel insecure when others are succeeding. Mhm. I will feel insecure or I'll feel jealous if others are succeeding. तो किसी की सक्सेस को देख के खुश होना, it's a very nice positive sign. That it's a very healthy sign. पर अगर दूसरों की सक्सेस को देख के अंदर कुछ संकल्प चल रहे हैं कि नहीं, इसने तो नहीं किया, हमें ही मिलना चाहिए था. So it's a ego might be there. Or They give the example of workplace Very also, like how at workplace somebody's getting promoted and thinking that, why didn't I get that promotion? right. Yes. Mhm. Yes.
having this feeling that they deserve it if something wrong goes, Yes. instead of Yes. having empathy. Not हाँ, having that Again, empathy. yeah, Hmm. empathy good चली thing. जाए यानी किसी की कोई गलती भी है तो हम Hmm. उसको करके देखो इसकी ये गलती है इसकी ये गलती है इसकी रहम दिल। रहम दिल नहीं होंगे Hmm. अंदर से Because it's more अंदर से absorbed. खोखलेपन होना। अंदर से खोखलापन होगा गुड यस यस हमें किसी की कमी को और बड़ा करके रखना। हाँ कमी को हम बड़ा करेंगे जो रहम दिल अंदर से भरपूर है हाँ। उसकी संभालेगा वो। हाँ कोई बात नहीं इट्स ओके आत्मा के ऊपर नजर बनी रहेगी ना राइट और Setting your goals higher than what you can achieve. yes the goals will be higher हम चाहेंगे कि एक ही दिन में हम कर्मातीत बन जाए वो तो पॉसिबल नहीं है यानी वी हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स आल्सो कई बार हम क्या होता है बहुत ज्यादा इसीलिए भी कि हमें थोड़ा हाँ थोड़ा तारीफ मिले कि बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे जैसे थोड़े समय में बहुत कुछ पर सोल कॉन्शियसनेस में ना इट विल बी रियलिस्टिक बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग तो ठीक है वी आर ग्रोइंग वी आर इवॉल्विंग सोल कॉन्शियस है तो ऑटोमेटिकली उसको मिलना ही है ना सोल कॉन्शियसनेस है तो मिलेगा ही मिलेगा बॉडी कॉन्शियस है तो खाली ईगो में जीता है राइट अंदर में खाली है मिलता नहीं है हाँ इसलिए वो ईगो में जीता है करेक्ट यस लेकिन सोल कॉन्शियस है तो मिल ही रहा है ना उसको पावर मिल रहा है इसलिए वो परमात्मा अंदर से से शक्ति सेटिस्फाइड है एग्जैक्टली और आज के काम की नहीं। आज के काम की नहीं पर अंदर से जब उसको एनर्जी जी। मिलती है ना तो वो करेक्ट उसके लिए फुल हो जाता है उसको Yeah. क्या चाहिए फिर रुपये पैसे मान सम्मान वो तो नहीं। उसको तो कुछ चाहिए नहीं राइट अंदर से अगर है तो ऊपर से कुछ चाहिए दैट्स व्हाट बाबा सेज ना कुछ चाहिए नहीं हाँ लाइक यू नो लास्ट संडे बाबा सेड एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला और कुछ चाहिए नहीं बट इन ईगो कॉन्शियसनेस देयर विल बी ऑलवेज दिस subtle feeling I want something more Hmm. like so that lack of something will drive me to do actions Hmm. and जैसे that sorry ask जैसे पूरा contentment जो है that's a sign of that we are not under the influence of ego. yes right you know it's very interesting the other day we were discussing the balance of being content and ambitious संतुष्ट संतुष्टता और ambitious होना चाहत की ambition होता है ना ambition चाहना। कि आगे हमें अच्छा जॉब में एक्सेल करें सेवा भी अच्छी हो ambition होना तो we were discussing this कि when I am content inside then I can easily be ambitious outside like being ambitious is good कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें अच्छा हो you know अच्छी तरक्की हो प्रोग्रेस हो which is good but it has to that ambition has to come from a space of contentment inside कि ऐसा नहीं कि मैं खाली हूँ और मुझे खुद को भरने के लिए वो बाहर की चीज चाहिए नहीं that energy of contentment will drive me towards enjoying my work enjoying whatever I'm doing and then automatically success will come तो सौरभ भाई इसमें जैसे ऐसा कह सकते हैं like what I've heard some people also talk about it जैसे नारायण मूर्ति जी हैं you know he talks about that actually compassionate capitalism so he says that you know I want to make a lot of money and I want to grow my business so I can employ more people but it's with a mindset उनका जैसे लक्ष्य जो है मतलब इतना बड़ा बनने का वो अपनी ईगो का नहीं है उनका लक्ष्य है कि मैं सोसाइटी के लिए जैसे क्या कर सकता हूँ जैसे रतन टाटा सर हैं you know he has a similar mindset very nice yeah how we can serve मतलब दूसरों का कल्याण कैसे करें भावना ये है जो भी जैसे ना या रतन टाटा और एक और जैसे नारायण yeah right because then it's not ego but it's like a higher you know purpose for Another thing I feel is if we are not able to let go, then it's the ego that doesn't let us let go. yeah ego doesn't let us let go right
Not being able to forgive, that could be a sign of like ego. Rooted ego. Mm. It's important to understand what is, और ऐसा नहीं है हम सभी perfect है, हम सब में ego है. But it's important to understand what is that ego for me. Right. If I am saying that, जैसे नहीं आज भी बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं सोचो विक्रम हमसे होते नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचे कि हम perfect हो गए, ऐसे नहीं है. Right. We all make mistakes, and then Right. admitting my mistake is also very important. Yeah. Then I can progress. Right? And ऐसे it's सौरभ भाई हम जैसे sorry please go ahead. नहीं बोली. नहीं, मैं जैसे कह रहा था, ऐसे ऐसे हम कभी नॉन बीके को मिलते हैं तो हम सोचें ऐसे कि हमें तो पता है, हम बीके से हम जैसे बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, then that's another that comes from a space of Yeah, Baba says, to be soul conscious. right. Not even to be BK conscious. Baba says soul. नहीं, उनको आत्मा के रूप में हम देखकर फिर जो बाबा टच कर रहे हैं वो शेयर करें. Right. इंटेंशन है कि उनको आत्मा रूप में कि इनोसेंट है, पवित्र आत्मा है, परमात्मा की संतान है, ऐसे देख के. कई बार बीके का भी ईगो हो जाता है. पानी पीना, पानी आज बीके आपने टच किया सौरभ भाई पर, the people who are like typical narcissist, you can see them that they are narcissist, right? How to deal with those guys? Yeah, exactly. That's a very good point, and they're non-BK too. They won't understand, if you try to tell them. Correct. Yeah. And we really wanted to reflect on a few of these questions, and one of these, like you said, so one is, what practices increase my ego? मैं वो क्या करता हूँ सारे दिन में जिससे मेरा बढ़ता है? कुछ ना कुछ तो हम करते ही होंगे ना, जिससे ईगो बढ़ रहा है. What practices reduce my ego? वो कौन सी बात है जिससे मेरा ईगो कम होता है? How to deal with someone who is under the influence of ego? जैसे अजय भाई बात कर रहे थे ना, someone कोई है जिनके अंदर ईगो है, नार्सिसिस्ट जो एग्जांपल है, तो अगर हमें उनके साथ डील करना है, ऑफिस में, घर पे, कहीं भी, है ना, तो कैसे डील करें? एंड व्हाट प्रैक्टिसेस मेक मी ईगोलेस? ईगोलेस यानी कंप्लीटली जीरो ईगो, कोई ईगो नहीं हो. So maybe we can share a little bit on this. थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर. So what practices? क्या होता है, हम अपने आप को जीरो बना भी लेते हैं, चलो हम जीरो हैं, लेकिन सामने वाला उसको और ही मिटा देना चाहता है, अपने आप को पूरा जीरो शो करने से. जीरो यानी आत्मा, बहुत ज्यादा सरलता, आत्मा में, जीरो यानी आत्मा में. जैसे जीरो मतलब हम कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब. कहते हैं जीरो होंगे तभी हीरो बनेंगे. राइट. नथिंग एल्स. भल है हमारे पास में, लेकिन उसका ईगो नहीं है जरा. That is also the way we look at it. The soul is playing the role, and the role is playing by the soul. Right. The soul is playing the role. The role is being played by the soul. Right. Right. I mean, ego ko, if you really say ना, जो बाबा कहते देह अभिमान. In every Murli Baba will say, देह अभिमान नहीं करो, देह अभिमान को तोड़ो. It's basically ego is what Baba is referring to. Ego, conscious. Abhiman is ego. तो ऐसे तो हम कहते body consciousness, but really is the real translation is ego of the body. Deha Abhiman, ego of the body. And Dehi Abhiman is ego of the soul. So it's the same thing. I have to feed the soul and starve the ego, is what Baba is saying actually, if you really think about it. So what practices increase my ego? क्या होगा जी इसका आंसर? क्या हम सारे दिन में करते हैं जिससे ईगो बढ़ता है? क्या करते हैं? When you compare yourself with others. Compare.
Yes. कंपैरिजन से बढ़ता है. If I'm comparing myself with someone else, jealousy से बढ़ता है. Jealousy से बढ़ते हैं. और Letting down somebody. letting down someone, right? Prove my point. Prove my right, right. I am right. I am I'm always that increases the ego. high expectations. More expectation. Yes. इन सब से बढ़ता है और Wanting more and more. wanting more and more. Right. है ना? पर ऐसे देखो लौकिक दुनिया में तो क्या आदमी चाहता ही है ना, हम और भी चाहे और भी इससे भी आगे जाना, इससे भी आगे जाना. Right. पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा और इससे भी आगे जाए और इससे भी आगे जाए. Correct. नहीं, वो अच्छा है, ambition होना अच्छा है, but it has to come from a space of contentment inside. क्योंकि अगर भाव भी नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ बढ़ेंगे भी तो नहीं ना. या नहीं, जैसे ना अगर अंदर से हम कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं, तब हम एक्चुअली जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें खुद को एंजॉय करेंगे. देखो, बढ़ने के लिए भी कैसे बढ़ेंगे? एक है दूसरों को दबा के आगे बढ़ना. हाँ, वो तो करना है. अगर अंदर से संतुष्टता नहीं है तो हम दूसरों को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. तो आगे हम तब बढ़ेंगे जब when I'm really enjoying what I'm doing. जब जो हम कर रहे हैं without any fear of success or failure, when I'm really enjoying what I'm doing, right, then अपने आप वो excellence आती जाएगी. And that comes when there is contentment inside. तो सकल Yeah. अंतर है, क्योंकि एम्बिशन होना भी तो अच्छा है ना. अगर पेरेंट्स के अंदर ये नहीं होगा कि बच्चे को वो आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे ही नहीं ना. और इसमें कहीं थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि संतुष्ट रहना और सही वे में आगे बढ़ना. क्योंकि क्या है, कई किसी को बार लेफ्ट इसमें करके आगे बढ़ना. हाँ, और कई बार इसमें हम डिसहार्टेंड भी हो सकते हैं. सपोज मैंने एक्सपेक्टेशन बना ली, मुझे यूएस का प्रेसिडेंट बनना है, अब वो तो नहीं बन सकते, है ना. फिर हम सोच के और दुखी होते हैं. नहीं, कई बार जैसे इट कैन बी एन वेरी हाई एंड अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन. Unrealistic expectations. हाँ, यानी बच्चा जैसे तो वहाँ रिस्पेक्ट. यस, बोलिए. Yeah, sorry, I was saying सौरभ भाई कभी वहां पहुंच भी जाएं जैसे, तो I don't know उसमें भी जैसे फिर then we need something else. जैसे अब ट्रम्प भाई हैं, उनको शायद कुछ और चाहिए अभी. आज का प्लेयर बना है ना ऋषि सुनक, तो उसके अंदर पार्टी मतलब the external power cannot make me happy. Right. फिर हम वहां तक पहुंच भी गए पर गारंटी नहीं कि खुशी मिलेगी. उसके बाद फिर लैडर भी खोजने पर नहीं मिलता है कि नीचे कैसे उतरे. फिर उसमें it becomes a stressful experience. Such becomes very stressful experience. That's why the important point to realize is I need to be. जज बाबा ने उस दिन कहा कि प्रसन्नता युक्त अप्रसन्नता मुक्त. And in whatever I am doing, I have to be happy in this right now. And that energy of happiness will then organically, eventually, अपने आप सब ठीक होता है उससे. जैसे सौरभ भाई gratitude जो है that will actually bring that contentment. Yeah, gratitude will bring. Shanti, Saurabh. बोलिए. So there is a movie, Netflix movie, which just came out. Om Shanti. So there is a Netflix movie which recently came out, The Wonderful Story of Henry Sugar. Benedict is acting on it. It's just a 40-minute story. But it's like, so this guy is a billionaire. And still he is not satisfied and happy. And one day he was looking at his father's library and he found a book about a magician in India. And he went back over there to talk to him. And he guided him to his guru, which trained him for meditation and stuff. He's like, even for 10 seconds, I can't be without thoughts. So, but he started training for 2 years. Then he came back to UK
and he started playing poker, as in reading cards. So he would read the card even while his mind was he became so strong that he could remember the cards. And he earned within half an hour $1 million. It's an actual story. And literally after winning it, he went back home and he was not feeling happy. And he threw it $1 million on the roads. So the cops came by, are you doing that? This is nuisance. He's like, I'm helping people. So he realized that I'm not doing good, even if I'm throwing, because they were accident, the people started fighting. Then he again, like what the spiritual training he got was to help people. So he literally built hospitals and helped a lot of below poverty guys to help them to grow. But he did earn the money because he got that trick. So same, I think ego, and even if we get, like, we can keep the high ambitions, but it's not worth it to waste the time which we have in terms of keeping the expectations so higher. Just being content, and if we are in our spiritual zone, I think everything can be great. And this all comes from ego. So thank you. Thank you for sharing. Nice, very nice. It's a nice movie to watch. Sure. Oh, very nice. क्या नाम था संचित भाई मूवी आप बता रहे थे जो? What's the name again? The Wonderful Story of Henry Sugar. The Wonderful Henry Sugar. Thank you. Right. These days I feel the moment I find myself or catch myself thinking too much about drama, that so thinking about the drama increases my ego. अगर ड्रामा के बारे में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, क्या करना है, कैसे हुआ या क्या हुआ, जो भी है ना, तो I really feel कि that is, if I'm doing that, if I'm thinking about the drama, then that is increasing my ego. बाबा कहते हैं ना कि अगर हम सही कर्म कर रहे हैं बाबा के कहने के हिसाब से, ड्रामा के बारे में हमें नहीं सोचना है. अगर हमारा कर्म सही है तो ड्रामा ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा. हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी ही आएगी, ऑटोमेटिकली आएंगे, हमें सोचना नहीं पड़ेगा. स्पिरिचुअल लॉ. इसलिए सिर्फ हमें अपने गुड कर्म पर अटेंशन देना है. And what practices reduce my ego? It's then जो भी हम, whatever we are doing for spiritual growth, है ना, याद करना, मुरली का अध्ययन करना, so practice करना, all this really help the soul to reduce the ego. There is literally no other way. How to deal with someone who is in an influence of ego? I think very important is not to do anything from a space of reaction. Because it's very easy to feel reactive when someone has ego. And that's where extra caution has to be made. कि उस space से हम कुछ react नहीं करें, because that's further going to increase the ego. The important thing I feel to understand is, again, no one externally is to blame. Our fight is with ego. It's not with any person, right? Because कोई है भी वो ego के effect में. आत्मा तो सभी अच्छे हैं, पर जो हमारी real लड़ाई है वो माया के साथ है, जो बाबा कहते हैं. तो इसके अंदर हमने देखा भी, चलो कोई under the influence. So our really सेवा, बाबा जो कहते हैं, is really how to bring in Baba's perspective, how to bring in the soul, how to use our powers of humility कहे या जो भी कहे, tolerance कहे, to make the situation small. To make the situation very small. अगर हम एक ही चीज को और बोलेंगे, नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, it's gonna worsen the problem. I'm adding fuel to the fire.
अगर हम ये मान के चले कि खुद पर शासन तब अनुशासन, वेरी गुड। हमारा हर कर्म दूसरों को, हमारे हर कर्म से दूसरों को सुख मिले, बस। Why to look and follow other people? Ego है, ठीक है, I'll just mind my business, that's it. Yeah. सौरभ जी, इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जैसे when we are even contemplating जैसे ऑफिस सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन में ना, that somebody else, if we are thinking this person has the ego, तो हम एक तरह से अपनी ही ईगो को, it's going more in the influence of ego then. Correct. And eventually, you know, we use the term sometimes, it's called burning the bridges. Right. If someone is under ego and I've reacted to, then I've burned the bridge. Right. Burn the bridge मतलब कि उनसे communication मतलब बंद नहीं करना है, burn नहीं करना है. You don't have to burn the bridge. किसी के भी साथ, किसी के भी साथ. Yeah. नहीं, वो अपने ऑफिस की बात पूछ रहे थे। हाँ, ऑफिस का ही, जैसे ऑफिस में अगर किसी को ईगो है ना, तो कैसे डील करें? तो वही है कि ईगो के, अगर हम सोच रहे हैं उनको ईगो है, तो ये भी हम अपना ईगो भी बढ़ा रहे हैं उसमें, है ना? तो उस टाइम मेन थिंग आई फील रियली जो व्हाट वर्क्स फॉर मी इज लाइक टू सी द सिचुएशन एज इनसिग्निफिकेंट, नॉट बहुत बड़ी बात, वेरी स्मॉल थिंग। निर्माण का हम अपने आप को निर्माण कर लेंगे, उतना उसका अपने आप ही सही हो जाएगा। जैसे जितना हम उस पे एनर्जी लगा रहे हैं कि somebody else is not right or something, then हम एक तरह से अपनी उसमें ईगो के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं. We are getting more in the influence of ego. Very nice. And what practice makes me egoless, and I really feel the experience in Paramdham with Baba, just I, the soul, nothing else, stories, nothing, that really makes the soul egoless. जो बाबा कहते राजयोग makes the soul, makes us egoless really. अपने आप को बुद्धि से परमधाम में ले जाना, just to stay there and forget about the everything else, है ना? तो उससे जो real actually egoless जो स्थिति है, जो बाबा कहते हैं अंतिम हमारा लक्ष्य भी यही है ना, egoless, incorporeal viceless and egoless, so we'll create होते. I'll probably share one last slide and end with it. I really like that quote I got from somewhere. It says, pride or ego is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. Ego is concerned with who is right. किसने कहा, किसकी बात है? और humility is what is right. जो सही क्या है, भले किसी ने भी कहा हो, पर वो सही क्या है और उसको हमें करना है. Pride is ego, anger. And this is another one. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. मतलब ऐसा नहीं कि अपने को कम समझना, पर अपने बारे में कम सोचना. Twist of words. Yeah. Nirmanta, right? That's what the theme also is now. Is Nirmanta. It's humility. Yeah. कहाँ से निकालते सौरभ भाई? नहीं, गूगल भाई है हमारे. गूगल भाई करते हैं. डालते होंगे किस टाइप का चाहिए. बाबा कराते हैं बस, लेकिन थोड़ा भी हमें हमारी धारणा में आ जाए वही बहुत है. Okay, great. Any other thoughts? Anyone would like to share? मतलब अपने बारे में ऐसे नहीं कि मैं कम हूँ,
पर अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ये बात जैसे बाबा ने कहा ना, बाबा के बारे में सोचो, बाबा के बारे में आपका है, सोचना, बस अपने आप ही बढ़ जाएगा। बस बस। जो बाबा ने ये भी कहा ना संडे की मुरली में, स्वार्थ के बारे में जो कहा ना, कि डिस्टरबेंस तब आती है जब थोड़ा भी स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ, हाँ, थोड़ा कि जो बाबा ने कहा कामना पूरी नहीं होती है, स्वार्थ। That's only, it's actually the same thing. It's ego. Underlying, energy is that. हर कोई स्वार्थ से कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस भी नहीं मिलती है, Right. क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होगा। तो जितना हम निस्वार्थ करते जाएंगे उसमें सक्सेस मिलेगी और हम सेटिस्फाई होंगे उसमें। Right. उसमें कॉपरेशन मिलता है ना, कॉपरेशन मिलता है। अगर निस्वार्थ में कॉपरेशन मिलता है, स्वार्थ तो कॉपरेशन नहीं मिलेगा। Right. Any final thoughts? So thank you. टारगेट यही है। Ultimate. Thank you everyone for joining. Nice to hear you, Ajay Bhai, and we hope to see you sometime soon in person as well. Yeah. Thank you, Saurabh. Thank you. Om Thank you, Shanti. Saurabh. Yeah, thank you, Love. Saurabh. Thank you. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Very nice topic. काफी टाइम हो गया ना, आप जब से गए हैं आए नहीं है ना इधर? नहीं, अब मैं फोन करूं सौरभ भाई आपको? Yeah, जरूर जरूर। Okay, ठीक। I also missed your call. Yes. Yeah. Thank you, Saurabh bhai. Yeah. Om Shanti. Thank you, Om Shanti. everyone. Have a nice day. Thank you. Om Shanti. Thank you everyone. Shanti. Thank you, Guruji. Thank you all of you.